बुझिबो तमे सेमिनार प्रेजेंट करले भी ना किछि क्वेश्चन अराइज करि परिबो सामना लोक को ना किछि तमे निजे बुझि परिबो दिनसटा को। तो फर्स्ट यू लर्न द टॉपिक एंड द डीपली कंटेंट खाली इग्नोर मटेरियल को फॉलो करनी मु कहबी अदर रेफरेंस सोर्सेस गुडा को भी फॉलो करो ताकि तमे से कंसेप्ट को भलो की बुझि परिबो। कारण दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू टेक द एनालिसिस ऑफ द एवरी पार्ट ऑफ कंटेंट तमे सबू पूरा सर जेंति मेहर सर कहले एते गुडे टॉपिक अछि ना तो सेमिनार में कि तुमको स्पेसिफिक दिन से गुडा कहीं कि चूज करा जेबो जोटा कि तम पई कि बहुत यूजफुल। तो तमे से टॉपिक टा को भलो की पढ़ी के प्रेजेंट करिवो एंड सेठी सुविधा हबो कोन ना काउंसलर तुमको से दिनसटा को क्लैरिफाई कर देबे। जदि तमे 50 जण पिला अछो तमे 50 जण पिला बाबा 50 टा क्वेश्चन अराइज करि पारुथिबो गोटे दिनस रे आमे 5 टा दिनस को एनालाइज करि परिबा। अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टूडेंट जहाँ पढ़ीचो ताको रिवाइज करबा पई कि विथ द गाइडेंस ऑफ द ऑल द टीम्स एंड आल्सो द काउंसलर इट इज एन बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डू द बेस्ट। भलो टॉपिक ताथरु जो गुडा को सर देबे ता भितरु एनालाइज करो ग्रुप जते बळे तुमको हबो ग्रुप मेंबर माने मोर तोर न हे कि गोटे प्रॉपर डिस्कशन कर जे कौन टॉपिक टा हेई परिबो केमिति को हमें एनालाइज करि परिबा को दिन सर यार भलो डेफिनेशन सपोज फॉर एग्जांपल हमें कंटेंट एनालिसिस नबा किबा गोटे इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी ऊपर करूछ आईसीटी रो कोन कोन पार्ट अछि को पार्ट लाइब्रेरी रे भलो इंप्लीमेंट हेई पारुची ए सब दिनस गुडा को सब पार्ट रो एनालाइज करो तापरे पेपर लिखिबा स्टार्ट करो ताहले कोन होबो ना तुम पेपर रो गोटे वेटेज रहइबो एंड तुम से टॉपिक ऊपर भी प्रॉपर्ली जानि परिबो जे कोन करि परिबो कोन न करि परिबो। ओके ओके मैम ओके देन मु तुमको बाबा चुना पिलाउछ wait a 1 minute मु शेयर करूची देखो। ओके आज मु तुमको हमर जो पार्ट टा अछि we will discuss the गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मो स्क्रीन शेयर होउची शो करूची तुमको नहीं मैम स्क्रीन शो करूची करूनी लो ओके ओके रोल नंबर और ना लिखो टिके ये रे ना रोल नंबर से टाइप कर दियो क्या प्रोसेस
हेलो सर नमस्कार सर हाँ कौन टिके सार टिके मैडम प्रोब्लेम अच्छी नेटवर्क प्रोब्लेम टिके नेटवर्क प्रोब्लेम अच्छी टिके मैडम कनेक्ट करछन गोटे हेलो हेलो मैं ऑडिबल Yes, madam. Yes, madam. हाँ Yes, madam. आज टिके नेटवर्क प्रॉब्लम अछि तो सेति पई के टिके प्रॉब्लम होची डिस्कनेक्ट कनेक्ट होची ओके अच्छा लेट्स स्टार्ट विथ द टॉपिक मो टिके नेट भलो क्लियर आसु मो कनेक्ट करबी तुमको स्क्रीनशॉट ता देबी फिलहाल वर्तमान मु तुमको जेति की पोर्शन मो पढै थिली नेक्स्ट प्रीवियस पेपर रे तमे सेतिरो किछि बुझी पारलो जो माने मो क्लास अटेंड करिथिलो हेलो हाँ आगे मैम जो आगे माने हाँ से माने जानी पारला तो आगे अच्छा अच्छा so content actually the concept of knowledge is that if you are connected to the information product and information services in the part of the knowledge it will be like information product is not a provisionality of the knowledge आम जिते बड़े information product बेली गोटे जिनस कहूचु से product टा कौन होची ना से product टा मे बी गोटे assent को बुझौची assent means कौन user demand first तो library science रो प्रथम concept हैला कौन ना आमे जो information जो knowledge जो source of knowledge को डेवलप करूचु और ताको सामना को आणुचु तारा काम होची यूजर सैटिस्फैक्शन फर्स्ट थिंग जदि यूजर सैटिस्फाइड होउनी ताहले इंफॉर्मेशन रो कोनोसी वैल्यू नाही तो इंफॉर्मेशन रो वैल्यू ता सेता बळे आसुची जेता बळे इंफॉर्मेशन ग्रोथ करूची एंड इंफॉर्मेशन कंसर्न होची माने डेवलप होची तो आमी जो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स पढिले इंफॉर्मेशन रो पार्ट्स पढिले तार ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट पढले तार वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशन केमिति ग्रोथ करूची सेटा भी पढले तो आज मु तुमको पढेबी यूनिट 10 11 12 एंड 13 व्हिच इज बेस्ड ऑन द ब्लॉक नंबर 3 the information product and information services अच्छा जते बळे हम information product कथा कहूचु सेते बळे कोन अराइज होची हम मुंड रे कोन आसुची ना information तो information बेली गोटे वर्ड जानलु जे डाटा को डिफर करूची और कोनोसी गोटे सब्जेक्ट को डिफर करूची कोनोसी गोटे फैक्ट को डिफर करूची एंड हाउ इट विल बी नोन एज द प्रोडक्ट ओके प्रोडक्ट कहले हम गोटे कमर्शियल अटेंड गोटे कमर्शियल वर्ड भलिया लागुची जे व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड हाउ इट विल बी कनेक्टेड टू द पैरिटी ऑफ द नॉलेज सोसाइटी रे प्रोडक्ट बेली गोटे दिनस कोन बेसिकली information is not about what will be available in the part of the library or it is not to collect all the informations to our service pattern आम service pattern रे हमें जहा को आनिबा सेटा information नुहे नाही जहा हमें यूजर्स को दउचे सेटा होची आम पई के information कोन ना which will be connected to the each part of the society and help to the users to develop their content information को से develop करि पारुथिबो and partially आम सोसाइटी को मध्य से कोन करूथिबो ना एक्सरसाइज करि पारुथिबो से को हमें कहूचु हेलो मैं ऑडिबल Yes, ma'am. ऑडिबल मैडम Yes, ma'am. ऑडिबल मैम तो सेति में अच्छा अच्छा ओके ओके Okay, the information product is what? Now, information product issued by the industrial, commercial publications, public services, similar to the organizations and patent holder by the
a library or any other materials, those are actively content to the development of our society. तो information product होची गोटे एमितिया जिनस जाको इंडस्ट्रियलिस्ट कमर्शियल पब्लिक सर्विसेज सिमिलर अदर ऑर्गेनाइजेशन कुड बी डेवलप ताको टारगेटली डेवलप करा जाए कोन पाएंगी ना टू प्रमोट द सोसाइटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टू डेवलप द सोसाइटिकल कंटेंट बिहाइंड ऑफ द नॉलेज सोसाइटी आम जेतबले मु तुमको पूर्व क्लास रे भी कही जे नॉलेज सोसाइटी टा को कोन हेची ना गोटे फेज बाय फेज डेवलप करछ फर्स्ट एंशिएंट वर्ल्ड थिला एंशिएंट वर्ल्ड इट विल डेवलप नोन एज द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आफ्टर दैट इट विल बी कनेक्टेड टू द इंडस्ट्रियल सोसाइटी आफ्टर इंडस्ट्रियल सोसाइटी इट विल बी नोन एज द इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नोन एज द नॉलेज सोसाइटी तो ए जो जर्निंग रहिला इंफॉर्मेशन सहित हम सोसाइटी रो तो it will be develop a new concept what is that information products तमे देखिथिबो जतबळे कोनोसी गोटे साइक्लोन आसुची या फिर कोनोसी गोटे बड़ धरणर किछि गोटे न्यूज़ एबे जेंति ऑक्सीजन रो तमे एबे रिसेंट न्यूज़ कोन ना ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल इन द मेडिकल्स एंड इट विल बी a biggest problem in the Delhi and Gujarat and other states. It is on the biggest news and every news channel to be focused and continuously deliberating that ki it is on the problem, it is not available. PM Modi is telling that, the Kejriwal is telling that. Those are the examples to connect the consent news. आमे भी सेमिति अवस्था को अपेक्षा करछु जे न्यूज़ टा कोन आसुची तो पब्लिक रो डिमांड कोन अछि पब्लिक कोन चाहुची एक्जेक्टली दिस इज द कंसेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एटा ही होची इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट तो सेई इंडस्ट्रियल्स कमर्शियल प्लीज समस्ते म्यूट कर दियो जहार पचारिबार अछि मु 15 मिनिट्स देबी वी विल डिस्कस दैट एबे समस्ते म्यूट करो kindly all are mute your microphone and also video. Please kindly बंद करो समस्तंकर माइक्रोफोन कारण तो मु जा कहूची तम माइक्रोफोन से डिस्टर्ब होचे से फ्लो टा डिस्टर्ब हेले पुनी कंटिन्यू करबा डिफिकल्ट ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम मो स्क्रीन शेयर होनी मु तुमको पढे बुझी दूची लास्ट 15 मिनिट्स वी विल डिस्कस दैट कि कोन तमे न बुझी पारलो आफ्टर दैट मु तुमको शेयर कर देबी ग्रुप रे मोर पीपीटी टा यू कैन शो एंड यू कैन मु जति कि लेखिची ताकू तमे इजीली बुझी पारिबो ब्लॉग टा किछि असुविधा हबनी आ जति न बुझी पारलो फर्दर हमें कोनोसी टाइम रे भी तमे फोन करले मु तटाको तुमको एनालाइज कर देबी बट एबे प्लीज काइंडली समस्त माइक्रोफोन ऑफ करो कारण मु से दिनसटा मते बारंबार डिस्टर्ब होची Okay, the information product kona na those are publicly involved in the content part. Gote content part को develop करिबारे हमको help करूची. The publications those are based on the societal target. Society को target करके जो publications गुड़ा का highlight करा जाए और library information centers गुड़ा को जो गुड़ा को promote करे से गुड़ा को हमें कही परिबा this is are known as the information products. The information product are the basically targeted to the audience and the users and it is the latest activity and promoting the variety of services. आर काम होला कोन ये latest users को latest information कोन दरकार user ताको target करे and आर काम होला it will be connected to the every part of the society. ये सब बेले चेष्टा करे सब part of the society सब part को attach करिया पई ताहले the basic purpose of those information products is to enhance the image of the organization and promote the production and services. Information product रा काम होला गोटे image तयारी करबो कोनोसी भी गोटे organization those are providing variety of services like your information centers, like your libraries, like your organizing associations, like your government agencies, like your commercial agencies to promote the image of the information and to development of the societal activities. आरो काम होला एमिति image create करिवो जेमिति सोसाइटी एंड से जो ऑर्गेनाइजेशंस जो माने एई इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट को तयारी करूचंती सेमानक भितरे गोटे बॉन्डिंग क्रिएट हेई परिबो एंड आउ कोन हेई परिबो they can create a image to control and to enhance the basic concept and aim of the organizations. Okay, it is an acknowledgement fact of the post-industrial society to become the earlier content of our society, and every part of the society should be balanced with the heart of touching to learning, research and development. तमे देखो सोसाइटी रो सब पार्ट रे ए चारटा दिनस निहाती दरकार
टीचिंग दरकार, लर्निंग दरकार, रिसर्च दरकार एंड डेवलपमेंट दरकार। तो यही चारटा जिनस को बैलेंस करबा पई कि बहुत गुडा ऑर्गेनाइजेशन आर देयर लाइक योर यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी, एम्स, अदर इंस्टीट्यूशंस आर देयर, एग्रीकल्चर, एग्रीज, मेडिलार्स, all organization are doing their best to develop our essential society। तो यही जो सोसाइटी रो डेवलपमेंट प्रोसेस अछि एथिरे कोठी कोन होउची ना तो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी लैक्ड। एते गुडे जो कंपटीशंस होउची तो वैल्यूटा लैक कर जाउची। एक्जेक्टली गोटे एग्जांपल दोउची तमे टिके इजीली बुझी पारिबो। आज के सोसाइटी रे कोरोना इज अफेक्टेड टू एवरीवन। आमे घरे रहिले भी कोरोना रे अफेक्टेड होबा कारण बाहर जे जाउची आसुची ता सहित भी भाइरस आसी पारे। तो आमे मेजरमेंट गुडा को जहाँ नौचे आमे जेमिति चलुचे करूचे जहाँ कले भी तमे जदी 4 घंटा बस के न्यूज़ चैनल देखिबो यू आर शेक्ड। तमे पूरा स्ट्रेक्ट हो जिवो काहे कि ना न्यूज़ वाला एते ओमिनेटिंग करी अरे एसी लगाओनी ऐसा करनी तैसा इन एनी सब टाइम रे गुटे प्रकार इंफॉर्मेशन दपा को आस जाउची। काहे कि आसुची ना तमे सुनिया को चाहछो। तो एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट रो काम हैला कोन to making the use of the information। आर काम हैला information को make करिबा and to manufacturing the create of the various informations in owned by the activities, product, procedures, message and services। information product रो काम होउची कोन ना information को तयारी करिबो and सब ब्रांच रा कंटेंट गुडा करे पहुंचेबो। this is the actual meaning of information products। Information can also be delivered in the internet। आगुरु कोन होतिला मैनुअली आसुतिला तमे न्यूज़पेपर पढुतिलो या फिर तमे समस्त ना रिसर्च पाई कि वेरी ओरिएंटेड जे मैडम रिसर्च केमती करिबो, रिसर्च विषय आमे किछि जानिनु ऐसा ऐसा आमे एमआई जो रिसर्च रो गाइडलाइन अछि इग्नोर ताको भी पढिला परे भी आमे किछि बुझी पारुनु। कोन होछि असुविधा ना से स्कोप ऑफ नॉलेज टाको आमे ठीक से बुझी पारुने। तो जते बेले इंफॉर्मेशन आम पाखरे अच्छी बट आमे ताको एनालाइज करि पारुने सेते बेले हमको आउ गोटे सोर्स दरकार जो थ्रू आमे इंफॉर्मेशन को कैच करि परिबा। तो दिस इज द प्रोडक्ट जते बेले से दिन सुरा हमर दरकार होचे आमे कोठी की जाउची आमे जर्नल सर्च करछे, शोध गंगा को सर्च करूचे। तो दिस इज द प्रोडक्ट इनफ्लिपनेट यूजिस रा प्रोडक्शन होची शोध गंगा जो थ्रू तमे जाय कि इंफॉर्मेशन सर्च करि पारुछ। तो इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन कहले कोन बुझुछो ना दोस द इंफॉर्मेशन आर ऑलरेडी अवेलेबल एंड इट विल बी डिलीवर्ड इन द मैनुअली और मे बी इन द by the internet and it will be contain the therefore of the information therefore of the interest of the users users रो interest को हमें therefore करू और encourage करिया पई कि इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट गुडा का ए जो टर्म इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट सेटा सामना को आसिला। ताहले व्हाट आर द इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट कोन कोन आमे ताले सोसाइटी रे देखुचे जहा को आमे इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट बोली कहि परिबा। तो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट मु प्रथम रो कहली इट इज एंड द कंबाइंड विथ द कमर्शियल एसेट। ये कमर्शियल एसेट को एनालाइज करे, इंडस्ट्रियल एसेट को एनालाइज करे, लैबोरेटरी को एनालाइज करे एंड सोसाइटी रो सब एसेट को मध्य डिफेंस को मिलिटरी कंटेंट को सब दिनस को असेंड करे। ताले ताले ए आर एग्जांपल्स कोन ना न्यूज़लेटर, हाउस जर्नल्स, ट्रेड प्रोडक्ट्स, रिव्यू एंड रिलेटेड पब्लिकेशंस, स्टेट ऑफ द आर्ट, then satisfactional reviews, trade reports, technical disease, any other things। ए गुडा को हमें कहि पारुचे कोन ना इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वन इज योर न्यूज़लेटर्स। ताले न्यूज़लेटर्स कोन जदि खाता कलम रखिचो ताले पैकेट धरि की बसचो प्लीज राइट डाउन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट इज योर न्यूज़लेटर्स। तो न्यूज़लेटर्स कोन ना इट इज एंड द periodical publications because it is published in a particular period we can say that it is a periodical publication issued by the various organization। yes, newsletter is not a based on a one organization, it is published by various organization, institutions, government department, professional society, trade and industrial society, many other societies। तमे न्यूज़लेटर देखिछो किंतु जानिनो सेटा न्यूज़लेटर बोली जेंति कि तमे जदि एलआईसी लिंक को फॉलो करूथिबो एलआईसी लिंक गोटे फोरम अछि लाइब्रेरी साइंस रो Madam, your voice is not audible.
Madam, we are not unable to listen your voice. Ma'am, your voice is not audible. Yes, I know. Now I am audible. Yes, Yes, ma'am. You are ma'am. Yes, audible. madam. Okay. Madam, you are not audible. Now I am audible. Yes, Yes, madam. madam. Yes, Yes, madam. ma'am. Now I am audible. Yes, Ma'am. madam. Yes, Now I am ma'am. audible now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, madam. madam. Yes, madam. Yes. Yes, ma'am. Hello. Hello. Yes, madam. Subhuji. Oh, madam. Hello. Hello. Oh, madam, Subhuji, madam. Subhochi. Subuji madam, start करो. Now I am Now I am audible audible, now. na? Yes, 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 madam. It is ma'am. madam. audible. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, someone wants to join, ma'am. Please allow it. Hello. Hello, ma'am. Ma'am, ma'am, we can't listen you. Hello. You all are can see my screen. No, No, ma'am. madam. देखा Black. It जाऊंगी. is black. You all are can screen. Hello. No, मुझे. No, madam. It is No, black ma'am. only. ଦେଖାଯାଉନି ମ୍ୟାମ୍। Hello. Hello.
cannot audible, ma'am. May I audible? ମୁଁ ଶୁଣା ଯାଉଛି? Yes, madam. Hello? Yes, madam. Hello? ଏବେ ଶୁଣାଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। Hello? Yes, madam. It is audible. Hello? May I audible? Yes, madam. Yes. Yes, ma'am. Ma'am. Hello? May I audible? Yes, ma'am. You Yes, are madam. audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello? Hello? ହଁ ହଁ ଗଣେଶ ମୁଁ ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଶୁଣା ଯାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନି ମତେ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଭୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୋଧେ। Subhendu, please mute your audio. Mr. Subhendu, please mute your audio. And even video on करते हैं तो please video भी off कर दिया तो bandwidth एतरे जाऊँची तो network error आस्ची. Ma'am, you cannot audible, ma'am. First of all, you have to switch up your video. Hello? Yes, madam. Hello? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। Yes, ma'am. Hello? Yes, madam. ओके ମୁଁ ଅଡିବଲ୍ ନହେଲେ ମତେ ମେସେଜ କରିବେ ବିକଜ ତମ ଭଏସ ମତେ ଶୁଣା ଯାଉନି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ।
सॉरी फॉर इंटरप्शन बट मते मेसेज करबो जे मु सुना जाउची ना सुना जाउनी लेट्स स्टार्ट विथ द टॉपिक हमें एमिति सुना जाउनी समय पड़बो okay so come to the newsletters what is the meaning of newsletters now newsletter are मु जेमति कहली सब सोसाइटी रो सब ब्रांच रे newsletter तयारी हुए पब्लिश हुए से तमे भी न्यूज़लेटर बहुत गुडे जगह देखि थिबो जेमिति कि जो माने स्कूल किंबा कॉलेज रे सर्विस करूचो से माने देखि थिबो गोटे मैगजीन्स बाहर एनुअल मैगजीन्स तो जोटा एनुअली बाहर सेटा भी आमे ताको न्यूज़लेटर बेली कहि परिबा बट इन द कमर्शियल सोसाइटी एंड कमर्शियल एजेंसीज गुडा करे पर मंथ से माने न्यूज़लेटर पब्लिश करंती फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूजर्स टू नो दैट what will be conduct in their organizations and what they are going to be organized in their pattern of the organizations it will be actually definitely concept रे एटा हेइतै को जगह रे केमिति प्रोसेस रे से माने करिथांती बट जोटी भी न्यूज़लेटर पब्लिश हेइतै तार प्रथम माने फॉरमोस्ट काम होइतै टू प्रोवाइड द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस तमे जते बळे गोटे इंस्टीट्यूट को एडमिशन करिया को भी जाउचो तमे सेते बळे भी देखुचो न्यूज़लेटर्स तमको गोटे प्रोस्पेक्टस दे दुचो इट इज एट द पार्ट ऑफ द न्यूज़लेटर्स तो न्यूज़लेटर रे काम होची कोन ना जदि हमें डेफिनेशन को जिबा तो अकॉर्डिंग टू द ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया न्यूज़लेटर मे बी एंड द इंफॉर्मेशन पब्लिकेशंस often simple in the format and clips in the stylish to provide the special information any advice any opinion and any forecast of a defined audience को forecast को चाहूची को तम गोटे organizations रे कोन advice अछि what are the opinion of behind the organization what are the special services provided in the organization what are the consent of the organization it will all are published in very briefly in the newsletters and also upcoming events what are the events doing in this month or in this week in very small organizations are publishing their newsletter annually but in the biggest organization like IIT Bombay IIT Chennai ionizers they are publishing their newsletters in the yearly monthly and many organizations are it will be in the by the 3 month after the 3 month they are publish their newsletters but the type of newsletters we go through that the research and development organizations they are publishing newsletter many associations also publish the newsletters government organizations private institutions academic institutions and international organizations they are prepared to publish their okay yes CSIR also publish their newsletters okay then what are the objective of the newsletter or what are the basic objective and function of the newsletter now they are protect to the fulfill the follow basic objectives this is based on their organization newsletter रो प्रथम काम हला से तार organization को represent करूची तो newsletter जो जगह रे publish होची suppose LIC link को जीवो LIC link रे बहुत गुडे parts अछि जोथरे तमे feel को देखिबो जे LIC link रो newsletter गुडा का आसुची तमे ताको free of cost डाउनलोड करके भी पढी पारो तो newsletter LIC रो जो newsletter आसुची सेतरे कोन आसुची सेतिरे आसुतिबो research papers then को माने लाइब्रेरी साइंस रे पीएचडी करूचंती को टॉपिक रे करूचंती को मानकर पीएचडी अवेलेबल हला व्हाट आर द बेले बेले कोन होय ना इंप्लीमेंट और यूजीसी रो कोन साइट्स रे आसुची नेट पई भी किछि इंफॉर्मेशन सेति रे आसे तो बहुत गुडे रिसेंट इंफॉर्मेशन और को जगह रे सेमिनार कॉन्फ्रेंस होची से सब जगह रे मध्य आसी जाय कोन न्यूज़लेटर भितरे इंफॉर्मेशंस थाय को तार एलआईसी लिंक कथा हम कहूची तो आर ऑब्जेक्टिव कोन थाय टू पब्लिश एंड प्रमोट द प्रोडक्शन एंड सर्विसेज ऑफ द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट थिंग से प्रमोट एंड प्रोडक्शन करिबो कोन सर्विसेज प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़लेटर बाहर करछि तार प्रथम क्राइटेरिया हला ऑर्गेनाइजेशन रो एम ऑब्जेक्टिव कांसेप्ट को हाईलाइट करिबो जेंति फर्स्ट रू कहतिली इट विल बी क्रिएट द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and to encourage the current and information sentence to holding the conference seminar workshop those are activities and conducting works should be connected or organized in this organization it will be highlighted in their newsletter is published in the timely eta gote timely publication में सेति पई it is a part of the periodicals and it will be in the current interest and content what are the content एथरे कोन content basically रहिबा कथा ना research and development of the organization कोन research and development करूची
कोन एसोसिएशंस करूची लाइक किट रे आमे जेतेबेले तमे जेतेबेले किट रे और कीस रे कोनो से फंक्शन हुए सेतिरे से माने कोन करंती ना फर्स्ट रे ए किट रो कोन एसोसिएटिव वर्क्स अछि फॉर द सोसाइटी सेटा को हाईलाइट करंती कोन पई कि दिटा दिनस गोटे टू कंट्रोल द सोशल एनालाइज्ड जे किट कोन कोन सर्विसेज देई पारुची सोसाइटी को एंड आल्सो no, it is an periodical. It is not annual. It is an periodicals annual भितर किछि डिफरेंस नाही. जोटा periodicals रो कंसेंट अलगा annual रो कंसेंट अलगा. कोनोसी periodical जे annually publish होची तमे ताको annually publication कहि परिबनी. Annually publication बेली लाइव सेंस रे कोनोसी टर्म नाही. It is an periodicals. Periodicals means it will publish regularly within a period. गोटे particular period रे it will publish. That is the reason it is called the periodicals. Okay, tale ei sab electronical newsletters the frequency publications industrial organization variety of the associations are interested to publish their newsletters ebi to bahut gude universities re bhi newsletter publish hochi so CSR news financial times of the business report those are the examples of the newsletter after newsletter aa gote asuchi kono na house journal kono acha did you know that what is the meaning of journal anyone can type what is the meaning of journal Madam, it is a research report. What is the meaning of journal Madam, journal means it is no it is not report. proceeding it is not proceeding journals and proceeding is another proceeding is not a journal proceeding is a edited book conference it is not a journal the journal and actually libraries ए टर्म गुडा को मने रखो कारण इंटरव्यूज गुडा कर ए गुडा ही पचरा जाए री रिसोर्सेस रिपोर्ट नो री नॉट ने री रिसोर्सेस एक्चुअली पाखा पाखी अछि बट से एन में कोन ना रिसर्च रिपोर्ट इट इज रिसर्च रिपोर्ट हे गेले असुविधा हबो एक्चुअली कोन ना लाइब्रेरी को जतबळे तमे सर्विस करिया को जिबा कोटे सेक्शन आछी सीरियल कंट्रोल सेक्शन इन दिस सेक्शन you collect all the periodicals okay periodicals को हमें जदी normal language रे divide करूची कोन one is your journal another is your magazines तमे देखि दिबो magazines आसे like तमरो सबु तक तो journal is based on a one subject and it will be control all the assigned research work in this particular subject like physics today is a journal library science academic journals it is a journal library management journal it is a journal because it is based on a one subject and it is control all the activities doing in the that subject and it will be collect all the information it will be published for their users it is the journal and what is the meaning of magazines magazine will be published in a time in a within a period it is also part of the periodicals and it is what it is the mixture of all subject so many times the interviews guda kare question ase what is the meaning of general gote sadharana loko bujhiya mai what is the meaning of journal and what is the difference between journal and magazines no article journal bitra difference journal bhitere article thae okay journal bhitere jo guda ka lekha hete those are articles means gote particular topic upar research he ki ta upar analyzed he lekha hechi this is the article and journal bhitere article thae journal ta gote periodicals jota particular timing period re publish hechi okay semiti asile kono na house journal what is the meaning of house journal na house journal is a serial publication issued by the industrial commercial public service or any similar organizations inform the public of its the performance of the style of the functioning गोटे ऑर्गेनाइजेशन कोन फंक्शन करूची और केमिति फंक्शन करूची ता फंक्शन सोसाइटी रो को पार्ट को कोन बेनिफिट देई पारुची व्हाट आर द कंट्रीब्यूट ऑफ द सोसाइटी इन ए ऑर्गेनाइजेशनल पैनल इट विल बी डिस्कस्ड इन द हाउस जर्नल इज ए performance is that key it improve the business and industrial relationship keep the employee and customer pictures it is create a very clear image in the society serve a useful platform to communicating the managemental view among the organization staffs and also how it will be benefited from the society in the educational pattern in the political pattern in the social activities and promoting the enhanced image of the management as well as the organization among the employee and the also interact to the customers house journal la kamo hela
attract करेबो कस्टमर्स को एंड एम्प्लॉय माने को एनहांस करेबो एनकरेज करेबो गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे कोन काम होउची कोन काम होउनी केमिति ताको डेवलप करा जाय परिबो कोन करा जाय परिबो ता ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन और डिटेल असेन गुडा को इन हाउस जर्नल मींस journal will be published in the based on a one area or one industry or one organization ताको हमें कहूछु हाउस जर्नल जदि जर्नल गोटे ऑल ओवर मो आमे गोटे जर्नल रे दबा बुक्स मोर गोटे आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल त माने प्रोजेक्ट करिवो तो तम प्रोजेक्ट को तमे गोटे आर्टिकल रे कन्वर्ट करिवो करि पारिबो कारण तमे जदि प्रॉपर्ली रिसर्च करछो कोटो कॉपी पेस्ट करी न ताहले इट विल बी ए रिसर्च वर्क एंड इट विल बी पब्लिश्ड इन ए जर्नल तो तमे जर्नल को पठेला बेले तम आर्टिकल ता कोन हबो ना जदि इन हाउस जर्नल सपोज मु नाइजर रे काम करूची नाइजर रे गोटे इन हाउस जर्नल अछि जेमति किट रो गोटे जर्नल बाहरुची सेति इन हाउस जर्नल मींस गोटे ऑर्गेनाइजेशन जर्नल बाहर करबो तारी लोक माने सेतिरे पब्लिश करिवे कोन कोन काम करूचंती कोन सर्विस देई पारुचंती सोसाइटी को हाउ दे आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी इट विल बी पब्लिश्ड इन दिस जर्नल दिस इज नोन एज योर हाउस जर्नल ओके first it is on the external house journal first जो journal services टा external house journal will be first published in the 1865 by the travelers of insurance company in the London London of exchange companies प्रथमे एई गोटे in house journal publish करिथिले 1865 रे for the promoting to and encourage to the customers to know about the commercial asset of the company. So types jodi jiba it will be also categorized in many way. First the external and internal. But in the house journal would be follow some characteristics. Jodi gote house journal hochi gote kichi characteristics को follow करिया पई से bound कौन से criteria गुडा को ना produce the organization enhance the image of the promoting the product and services. Say particular organization what the services are they are given and what are the basic product or basic areas are there the organization doing for the society it will be promoted in the house journals and distributed free it will be distributed free of cost from their own employees it will be not as get from any commercial benefit it will be distribute to their employee with the fanatical content and it will be no money for that and it is be printed or any in a very quality paper and usually in the attractive mode it is maybe available in the internet and by the sources now it is available okay usually carry on the basic of the advertisement it is known as the best of the advertisement okay. Then third products is that trade and product of the bulletins. Third product is trade and the product of bulletin. The trade literature is the a term which will be collected to the many definitions. Trade कहले हमें बहुत बड़े जिनसों को बुझुचे basically what are the in the use of library it will be known as the promoting material of the distribution. Trade means it will be promoted material distribution item in the part of the library content. It is the very important sources of information brought out by the periodicals, expensively of the one published by the organization or the society. ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन्स कहले कोन बुझुछ त माने ना जते बळे गोटे आमे इन सपोज यू आर वर्किंग इन ए लाइब्रेरी एंड यू आर कंट्रोल द पैनल ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉग you are preparing the library catalog and if you are connected to the each and every subject you will be connected you will collect all the information bibliographical information of a book and after that you will collect all the information and arranged in a systematically order it is known as your catalog but if it is the catalog is published to the users and access to many accessible point it is known as the bulletins or the information about the content. Okay. The trade literature is produced for the almost every kind of materials, products, services, including the book, chemical,
drugs, householder or any instruments, and it will be control and panel for the purpose of the services. आर प्रथम काम हला यूजर्स को सर्विसेज दबा एंड कोनोसी जहा को हम बुलेटिन्स बेली कहूछु like getting all the information and produce in a systematically order so that users can easily understand what the services, what the informations are gathered in the particular organizations. So their function are there. Those bulletins are published to promote the scale and the various type of the products. What the organization should be product and what are the planning of the organization, it will be display on the bulletins. And useful sources are promoting their content. The actually trade bulletin को area को cover करे ना scientists, engineers, medical personalities, medical accessories, and also drug society and maintenance of the consent words like your डिजास्टर मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट ए सब पार्ट गुडा को बुलेटिन्स गुडा का सब्सक्राइब करे काहे कि ना बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसीज गुडा करे इंफॉर्मेशन गैदर करबा पाई कि बुलेटिन दरकार हुए. सपोज तमरो नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी रिलीज हैला, नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी बाहरी गला, आमे जानिले बाहरी गला, आमे तार बेसिक पॉइंट गुडा जानले जे ए दिनस गुडा का हेची, बट कोन चेंजेस हेची, केते वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन पुटन हेची, केते वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन बाहर को आसीची, से गुडा को आमे जानिया पाई कि कोन दरकार ना हमको गोटे रिसर्च वर्क दरकार ता ऊपर करिया पाई कि जे को पार्ट ऊपर रिवाइज हेची. तो इट विल बी अवेलेबल बाय द बुलेटिन सोर्सेस. ए सब दिनस गुडा का हमको बुलेटिन सोर्सेस रु मिली पारिबो एंड हेल्पिंग इन द कंपेयरिंग द सिमिलर प्रोडक्ट टू द अदर अवेलेबल मैन्युफैक्चरर्स. हमको बुलेटिन कोन हेल्प करे ना गोटे सोर्सेस रु आ गोटे सोर्सेस को कंपेयर करिया पाई कि मध्य इट विल बी हेल्पफुल. देन फोर्थ वन इज योर स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट्स. The state of the art reports refer to the highest level of general development as at the device, technique, scientific field of every particular time. It is the definition of Wikipedia. State of art corner. Now it will be highest level of the general development of a device, technique or the scientific term. कोनोसी भी गोटे scientific term को divide करिबा तार general development को analyze करिबा होची state of the art report. It will be issue or maybe used mostly in the relation of the technical topic and business and in the commercial asset. ए सब जगह गुडा करे state of the art report use करा जाए. State of art report जदि हमें जानिबा ता भितरे कोन features are there, ततरे कोन features थाए. First one, it is under compatibility. That means all the subject those are related to the societal development in the commercial asset or maybe in a business topic or maybe a economical economical development process, it will be included in the state of the art report. Then it will be analyzed in the thoughtful content, deeply, extremely analysis, what is the topic and how it will be connected to the users and how it will be concerned to the informational value. Then value added services, it will be recorded to the users, which is case of the subject specialist. And utility, the degree to which the state ability is the multiple functions. आर बहुत गुडे functions थाए केमिति आमे यूजर सामने रे रखी परिबा जे जेंति तमे भी रिसर्च करूचो, तमे जते बेले तम प्रोजेक्ट करूचो, तमे फास्ट पचारुचो मैडम एई प्रोजेक्ट आमे प्रथमे देखुची लिटरेचर रिव्यू. दैट मींस आ ऊपरे किए कौन रिसर्च करिसंती, एते बेले किए कौन रिसर्च करछंती तार बेनिफिट ता तमे जानि पारुचो, तम प्रॉब्लम एरिया टा को बुझी पारुचो. जेते बेले लिटरेचर सर्च आमे करूचे या फिर कोनोसी गोटे टॉपिक को रिसर्च बोर्ड को आणुचे, आमे प्रथमे बुझुचे व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ एरिया, what is the problem of area. जते बेले problem of area को तमे analyze करि परिबो, सेते बेले तमे connect हेइ परिबो what is the basic concept. ए जो problem of area and how it will be convert to the solve procedures and how what is the basic problems and how the problems are affected to our society and what are the procedures to come out the problem. This is actually the state of the art report of any asset. कोनोसी भी गोटे asset रु हमें ए दिनस ए state of report रु हमें ए problem रो ए part गुडा को जानि परिबा. Then statistical review. Statistical review is a trade report. It is useful product of the information analysis and consultancy of the repackaging of every subject specialist. It is be published by the some specialist. Suppose तमे हमें गोटे लाइब्रेरी रे तमे देखिथिबो जो माने लाइब्रेरी रे जॉब करिछो पाखा पाखी आम पाखे गोटे आसे कोन ना
गोटे पीजी गोटे सपोज तमे गोटे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने काम करूछ तो से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर्स माने तमरो स्टूडेंट्स ओके तो डॉक्टर गोटे मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने तमे लाइब्रेरियन अच्छो डॉक्टर माने गोटे डॉक्टर जेबा को चाहूची गोटे ऑपरेशन को सीता पूर्वरु ऑपरेशन विषय रे और एनी केमिकल ऊपर टिके नॉलेज चाहूची तो से तुम पाखु आसीबो तुमको केति समय रे मागिबो विदिन 1 आवर विदिन 15 मिनिट्स भीतर मते ए आर्टिकल्स गुडा का टिके दरकार और ए गुडा का दरकार ओके रश्मिता पात्र प्लीज म्यूट योर डिवाइस Yes, ma'am. Please mute your device. Okay, thank you. तो ताले हमें कोन करबो विदिन मिनिट भीतर हमें इंफॉर्मेशन ताको दबा दरकार ताको तो हमें कहबन त दिन छाडी के सो नबो बेली की नॉलेज तो at that moment you should access all the information quickly. तो दिस इज द एक्चुअली स्टैटिस्टिकल रिव्यू जत्ते बळे तम पाखरे तमे गोटे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने काम करिवो तत्ते बळे जो इंफॉर्मेशन गुडा तमे पाइबो ताको विदिन मिनिट भीतर हमको रिव्यू करिवार अछि और रिव्यू केमती करिवो तमे तो सिंपल ग्रेजुएशन और सिंपल लाइफ साइंस या फिर एमलिट करके जाइछो तमे मेडिकल साइंस को केमती एनालाइज करबो इट विल बी एनालाइज्ड बाय द स्पेशल subject heads or specialists or professionals. They are analyzed and scouting the informations. They are after the scouting the information, we can arrange the information in the alphabetical or maybe in the classified order. It will be access to the users at the time of need. Okay, so this is the statistical review. That means it is useful from the document services and it will be explored by the subject authors or specialized Then what are the features? Now it is refers to analysis information. It will be deliver all the information. Those are already analyzed and it is in the repackaging modes. And it is the help the development of the future consent of a subject. Okay, future consent of subject को develop करिपारे it will be help. The trade report is the tool. It is a very important tool in designing to the help of the scientists reading and acquiring the recent development and research in their conducting in the particular subject. Actually, the trade report जो दिनसटा सेटा मु जेमति तुमको कहली एटा actually दरकार करे को माननकु ना जो माने रिसर्च करूचंती because researchers जो माने रिसर्च करूचंती जो माने जेमति कोरोना वायरस रो तमरा एंटीडोज को वैक्सीन्स आर रिलीज्ड केते इमीडिएटली से माने रिसर्च करले ओके ताले तो सेबानगर रिसर्च प्रोग्रेस रे हमको हेल्प करूची कि ना एमिति किछि रिव्यूज लिटरेचर जोटा हमको एक्चुअली एक्सेस करिया पेंगे इंफॉर्मेशन को सहायता करिवो तो दिस इज यू ऑल आर अंडरस्टैंड माय कांसेप्ट ना तमे बुझी पारुछो तना मु जा पढौची मो इंग्लिश ये को मिसे की पढौची ताकि तम माने कंफ्यूज होबनी कारण ए टॉपिक टा टिके बहुत क्रिटिकल दिनसो एते सब नुवा नुवा दिनसो गुडा का अछि यू ऑल आर अंडरस्टैंड ना Yes, ma'am. Okay. So beside this, it is help to trade report specialized readers and utilize the time of the effective of the research. Actually, the trade reports is help to the every researchers. Those are actually conducting their research to protect both two things. कौन data दिनसा जे गोटे नॉलेज से माने बुझी परिबे एट दैट टाइम से माने कोन करि पारुथिबे ना यूटिलाइज यूटिलाइजेशन देयर कंसेंट नॉलेज से माने जो नॉलेज ऊपर रिसर्च करूचंती तार ताकू भी बुझी पारुथिबे एंड टाइम कंज्यूम को मध्य से माने इफेक्टिवली यूटिलाइज करि पारुथिबे तो दिस इज द ट्रेड रिपोर्ट्स एंड अनदर थिंग्स इज दैट टेक्निकल डिजिट what is the meaning of technical disease now web dictionary defined that it is a eta hochi tamara box मो कहूची कहा को नै कि तमरो ना इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स
It and the sixth thing that it is an technical disease. Okay, technical disease kahaku koile na, it is compared to piece of literature of any body of the Sanjay Pusti. What are you doing at? Why you are not Sanjay Pusti? Please mute your microphone. मैम मुझे मैम गोटे You प्रश्न type the थिला question. You type the question. Mute your microphone and type your question in the chat box. Okay, तो डिजिट र माने कोन हैला ना जते बडे कोनोसी गोटे इन्फॉर्मेशन को हमें समराइज करूचे तमे गोटे टर्म सुनिथबो abstracting. In your library science we can say that abstracting services. What is the meaning of abstracting? That means summarization of the subject, summarization of the concept. कोनोसी भी गोटे पार्ट को कोनोसी गोटे सपोज मो ना पीएचडी करूची मोर पीएचडी हैला बिब्लियोमेट्रिक कंटेंट ऊपर मो पीएचडी करबी मोर बिब्लियोमेट्रिक कंटेंट ऊपर किए कोन रिसर्च करिसंती दीर्घ 20 वर्ष तळुरु मते सेटा दरकार तो सेति पय मो कोन करबी मो कोनोसी लाइब्रेरी जिबी ई शोधगंगा को जिबी तो शोधगंगा रे मो केते आसी जिवो तमे भाबो तमे गोटे प्रोजेक्ट कला बेले तुमको केते हरास लागुची 5टा आर्टिकल पढिया पे तो जने जे पीएचडी करिवो से 50 75 किबा 1000 दिन पढिया को पडिवो तो ए सब दिन गुड़ा को से इजी नुहे ताको सब तक पढ़िबा बुझिबा एंड ताको एक्सेस करिबा तो सेति पय कि जेंति तमरो ट्रेड रिपोर्ट तुमको हेल्प कला फॉर द रिसर्च वर्क इट इज आल्सो टाइप ऑफ द trade reports and it will be contain the essential core of matter and summarize the sort of information form of a particular body of the research konosi bi gote research body ro summarize kariki it will be matter accessible display and the useful sources of information for managerial and technical work from the industrial consent guda kare suppose IT and ICT research work upare it will be helpful from the part of the research work and जो माने IT manager अछंती से मानन पई कि एटा टिके सहज होइताय through the technical visit the managers and the technical workers in the industrialists can easily work and they can know how to control the technical asset and their work okay तो आमे जत्ते इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट देखिले सबटु एतिकी प्रोडक्ट ए 6टा प्रोडक्ट मच मोर इंपोर्टेंट एंड दोस आर लाइक द टूल्स एंड वी कैन से दैट इट इज द टचस्टोन ऑफ द एवरी लाइब्रेरी एवरी सबु लाइब्रेरी और सबु लाइब्रेरी रो इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स हिसाब रे एगुडा का थाए जते बळे तमे बड़ बड़ लाइब्रेरी के भी जीवो सेठी देखिबो न्यूज़ लेटर्स आर अवेलेबल in the variety of content variety of institutional newsletters are available house journal or home journals are available hai trade and published bulletins are available state and the report are available kon pa ki available na to provide the basic services to their users where they are available or they are needed to the content their research work it will be only and only for the contemporary part of the research work and it is summarized all the concept information and provide the basic services to their users okay those are the product of information now we are connected to the unit 12 and 13 this is the information services okay information services kona now what is the meaning of information services by the Ranganathan says information services is that it will be provide the information at that time of the need of users in a time where the information can used in the proper manner आमे कोनोसी भी लाइब्रेरी को तमे जाओ कोनोसी भी तमे जो बटी ग्रेजुएशन पढिथिबो जति लाइब्रेरी कथा तुमको पचरा जेबो तमर गोटे बैड एक्सपीरियंस दिबो okay Sanjay Pusti we will discuss after the information services it will be very long and I have no time to elaborate before the network should be discontinued so we will complete my paper okay okay then information services कोना ना जत्ते बळे कोनोसी भी लाइब्रेरी तमे जाओ ग्रेजुएशन जत्ते बळे पढुतिलो तुमको कोन कर दिया जाए तुमको अटके दिया जाए जे तमे ठिया हो टिके काली आसो बही नबो परदिन आसो बही नबो एई टर्म गुडा को तमे सुनिचो बहुत थर ए बही अवेलेबल नाही काली आसो बही आसीनी बही रो काम सरीनी एई दिनस गुडा को हमें सुनी थाओ बट जत्ते बळे रंगनाथन कर पार्ट आसिला वी आर इंट्रोड्यूसिंग
we are introducing the concept of 5 law in our library society. It will be discussed that 5 law of library science is like a millstone or it will be like a touchstone of every library. ये library concept को ही change करला 1931 परे सबो library ओके सबो लाइब्रेरी याकू एक्सेस करबा को चाहिए लाइब्रेरी रो 5 लॉ को इंप्लीमेंट करले सेही सेंस रे रंगनाथन कहिले जदी गोटे लाइब्रेरी विद इन टाइम भीतर इंफॉर्मेशन यूजर को दोउनी एंड यूजर से इंफॉर्मेशन को यूज करी किछि बेनिफिट पाउनी तो लाइब्रेरी इज योर डेड you have a dead librarian in a dead library. So Ranganathan always say that if the library is connected to the information consent or it will be connected to the users and provide the basic services to the users to connect the information and the users can get all the benefit from their sources, then it is known as a best information sources and best services of the library. This is known as the information services. The particular timing day, particular users को तारा related information provide करिबा होची information services रा first and priority काम. तो information services रे हमें कौन देखिबा ओके तमे को भाबुथिबो जे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस सर्विसेज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज हमें सबले एथरे कंफ्यूज हो जे व्हाट इज दिस इज द जोटा रेफरेंस सोर्सेज इट इज नोन एज द इंफॉर्मेशन सोर्सेज नो रेफरेंस सोर्सेज इज अनदर थिंग्स इंफॉर्मेशन सोर्सेज इज अनदर थिंग्स रेफरेंस सोर्सेज always get to connected the information from the users part and it like info reference sources होची गोटे reference services होची गोटे panel और गोटे bridge जे users को connect करे कहा सहित library सहित but information services धाटो टिके ऊपर कौन पाई कि ना it will be connected in the manual way as well as the in the informational or by the internet mode or online mode it will be connected as that information अच्छी बेली भाबिबनी जे एटा केवल online mode रे ही दिया जाउतिबो it will be bothly connected in the both side of concept. Tale what are the information sources na Rashmita Patra please switch up your camera okay tale कोन services आसे information रे गोटे library रे literature search and bibliography so जदी खाता कलम धरछो you just note down literature search technique use technical inquiry services document delivery services translation services application of the content analysis in information services customized organization of the information services citation analysis ICT applied in the library and many others तो हमें ये नोटा को highlights करिचे what is the literature search and bibliography actually in the library science the literature search is an the executive element of every users and every asset of the research तमे कोनोसी भी काम करो तार गोटे सिंपल डेफिनेशन मु खाली रीड करि दोची लिटरेचर सर्च इज an executive search from the publishing information conducted in the systematically using all the bibliographical fields aim to locating as the materials of the topic in the possible manner and it is the first step of every research तमे जेते बळे एबे प्रोजेक्ट जो करूछ गणेश you should know that कि जेते बळे हमें प्रोजेक्ट करूचे सेते बळे कोन होची गोटे प्रॉब्लम हमें नेले सपोज हमें गोटे प्रॉब्लम नेले जे वेब कंटेंट एनालिसिस ओके या फिर यूजर सैटिस्फैक्शन हमें फर्स्ट देखुचे यूजर सैटिस्फैक्शन ऊपर की कोन रिसर्च करिछि की कोन रिसर्च करिछि जानि सरला परे मु जो प्रॉब्लम ता नेइछि से प्रॉब्लम ता ऊपर मु टिके थरो होई जिबे यस ए प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन ए हे पारे तमे समझ सिनोसिस लेखिया व्यस्त थिबो तो सिनोसिस रो फर्स्ट प्रायोरिटी होछि कोन ना रिसर्च ऑफ लिटरेचर सर्च रे तमे कोन देखिबो ना एक्चुअली जो रिसर्च ता मु करूछि तार रिजल्ट ता कोन हाइपोथेसिस ता कोन आसीबो तार ऑब्जेक्टिव ता कोन आ एटा मु केमिति जानिबी ना पुराना रिसर्च रु जानिबी पुराना जो माने ए रिसर्च ए टॉपिक ऊपर ऑलरेडी दे आर डूइंग देयर रिसर्च वर्क्स एंड दे आर डिफाइंड ए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म what is the information what is the problem how they collect all the information how they arrange all the information how will be they finding the solution what are the suggestion it all are based on the literature review
तो तमें जमती गोटे सिंपली प्रोजेक्ट कला बेलू लिटरेचर सर्च तम कि एते इंपोर्टेंट आसुची सेमती भाव गोटे साइंटिस्ट रिसर्च करिया पूर्व प्रत्येक केमिकल उपरे प्रत्येक स्टेप उपरे ताको केते रिसर्च करबा को पडुथिबो तो इट इज ऑन द बैक इट इज ऑन द आमे कहि परिबा लिटरेचर सर्च इज लाइक ए लाइफ ब्लड ऑफ एवरी सोसाइटी without literature search we cannot conduct a specifically information it is on the a basic element of every research work. Literature search can be known as the long range of reference services. तमे reference services पढ़िছো short range, long range, but reference literature search is the part of the long range services, which is generally provided to a specialized work and speaking the information where the particular information is available, what is the problem, and how it will be connected to the solutions. This type of services is more common in the special library. Actually, जेमती कहली literature search को मानकर दरकार जो माने research करिवे जो simple graduation पिला literature search दरकार नहीं तो exactly this type of services is provided in the special libraries and the request of any professors, any business, any conducted works what they are needed in their research it will be affected or it will be collected by the literature research. और आमे याकु जहाकु सिंपल वर्ड रे कोचु रिव्यू ऑफ लिटरेचर ओके नेक्स्ट सर्विस इज योर सर्च टेक्निक यूज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्च टेक्निक यूज सर्च मींस यू कैन सर्च वेयर द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल तमे जदी मैनुअली सर्च करबो तमे कोनोसी कैटलॉग सर्च करबो जोथरे बिब्लियोग्राफी गुडा का अछि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिब्लियोग्राफी मींस इट विल bibliography is known as a list of documents or information of documents कोनोसी भी कोटे डॉक्यूमेंट रो लिस्ट बेली कोन बुझुचो बाय द ऑथर और बाय द subject or by the title or by the publication by the year anything जो एलिमेंट गुडा को हमको बही पाखरे पहुंचे परिबो दोज आर नोन एज द बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स तो बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को सर्च करे पे हम लाइब्रेरी कहा को यूज करू छे योर सर्च टेक्निक यूज इज कैटलॉग मैनुअली जते बडे तमे सर्च करि पे छाडी की ऑनलाइन में सर्च कलो गूगल को गले तमे कोनोसी भी गोटे टर्म माडो 10टा तम पाखे ऑप्शन बाहर के जाउची जे हां एई ऑप्शंस अछि और एई दिनस अछि तो तमे जोटा तमर दरकार तमे सेटा को सर्च करके बाहर करूचो तो दिस इज द सर्च टेक्निक यूज बट इन टेक्निकल वे रे जते बडे तमके गोटे इफ यू आर ए लाइब्रेरियन और चीफ लाइब्रेरियन ऑफ एनी लाइब्रेरी you are collecting all the information from the past of the content setru tame kemiti users ku dabo informations or user pakre pahunchebo na first you should understand what is the subject search technique you should follow some steps after that it will be connected to the users okay first thing understood the subject what is the subject and how it will be available and what are the basic content available in the particular subject first you understand what is the subject and what is the problem area after that discussion the scope coverage and the periods it will be collected all the information from the period wise or what is the coverage of the subject what is the aim and objective of the subject it will be connected after that you formulation a strategy search strategy you should follow some strategy many strategy are there mu elaborate ko jauni because time is very short okay formulation strategy ko you can go through the some strategy like you can access from many databases are available where you put the information setru tame information pai paribo jemti tamara in flipnet re epg pathshala ko tame search karucho tame gote term use karucho ya fir shod ganga re search karucho tame kotu ko jaucho title ko gala gote title mala library science ro sabu tak tumko this is the database search eta ko emti bahut gude database achi online re you can search but you follow a strategy kemiti tame ko strategy means if you collect access all the information by the author or by the title or by the subject what is the basic strategy you should follow in the library which is easier to librarian and also easier to the user part it will be you formulation a search strategy after that you scanning all the information like primary secondary and tertiary information you followed all the information which information is recorded by the users suppose you are librarian in a school library you should follow all the tertiary sources if you are the librarian
review report जोटा मु तुमको कहली product review with the review report कहीं ना preliminary or primary information जोटा थिबो it is not in a very short form, it is in a very heavy form. जने research करूची से तो तुमको 4-5 पेज रे लिखिबोनी रिसर्च रिपोर्ट पढिबो तो किछि आंसर करथि तो किछि रिसर्च प्रोग्रेस करि परिबोनी. तो आमे ताको कोन करथिबा दरकार एब्स्ट्रैक्टिंग हेतिबा दरकार और आमे ताको केमति रखिथिबा दरकार ना रिव्यू करिकि रखिथिबा दरकार ताले कोन हबो द यूजर कैन एक्सेस ऑल enter a marketing way means you are accessing all the information arranging so that user जते बळे तम पाको आसीबो से इजीली इंफॉर्मेशन पाखरे पहुंची परिबो नै कि इंफॉर्मेशन खोजिया को ताको टाइम लागिबो. एक्चुअली इंफॉर्मेशन हम पाखरे लाइब्रेरी थाए लाइब्रेरी गोटे वर्ड यूज हुए दैट इज रिट्राइव मींस दोस आर ऑलरेडी अवेलेबल बट इट नॉट इन अवेलेबल इन आवर आई साइड विल ऑल द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द पर्टिकुलर टाइमिंग ताको अरेंज भी करि थाउ बट ठीक टाइम रे हमको मिलेनी तो सेही समय टाको हमें कहू कोन रिट्राइव करबा दैट मींस सर्चिंग again and again we can search the information it is the wastage of the timing. तो हमें सर्च टेक्निक यूज रे कोन करबा ऑल द इंफॉर्मेशन अरेंजिंग इन ए सिस्टमैटिकल वे. प्रथमे सब्जेक्ट को बुझिलो तापरे कवर कलो स्कोप एरिया को पीरियड को कवर करूची. सपोज जने रिसर्च करूची महात्मा गांधी को ऊपर से महात्मा गांधी को ऊपर रिसर्च तारा इंग्लिश लिटरेचर बेस्ड ऑन द महात्मा गांधी को ऊपर इंग्लिश लिटरेचर से रिसर्च करूची पीएचडी थीसिस लिखुची और एनी रिसर्च वर्क करूची से तुमको पचारिबा से कि महात्मा गांधी को लाइफ स्टोरी गोटे विराट बड़ लाइफ स्टोरी एंड इट विल बी नॉट अवेलेबल इन ए वन टॉपिक. तांकर स्कूल थारू लाइफ थारू आफ्टर डेथ तांको थॉट ऊपर एनालिसिस बहुत गुडे काम होईची. तो फर्स्ट तमर एरिया टा जानिबा दरकार को एरिया ऊपर से रिसर्च करूचंती. इज दैट देयर पर्सनल लाइफ, इज इट दैट देयर एजुकेशनल लाइफ, इज इट दैट आफ्टर द डेथ तांको थॉट्स ऊपर की कोन रिसर्च करचन ता ऊपर कहा ऊपर पीरियड एंड स्कोप सब बेले सब्जेक्ट रो गोटे एक्सेस पार्ट हेते सर्च टेक्निक यूज को जते बेले हमें यूज करिथौ. After that you formulation a strategy. After the strategy you go through the sources where the information is available like primary, secondary and all those. Then entry a format, arrange in a systematically way. Then after that all the information are indexed. Index means kono हमें abstracting रो जानि छे. Abstract means summarization of a document. Indexing माने कोन ना arranging all the information with the located area. को एरिया रे तमे बड़ केबे बही देखि थिबो मोटा बही से बहीर पछपट रे सब बही रे न थाए. यूजुअली दोस आर पब्लिश्ड इन द वेरी गुड organization, very good publishers. It will be access all the information in the last page. This is known as your indexing. Indexing रे कोन थाए सब टर्म थिबो साइड रे ब्रैकेट रे तारे थिबो से पेजेस को गले से टर्म ता तमे पाई परिबो. दिस इज द कंटेंट लाइक कंटेंट रे कोन अछि सब्जेक्ट खाली लिखा हिची बट इंडेक्स रे प्रत्येक टर्म पई की गोटे लोकेशन मार्क दिया हिची. तो जते बळे लाइब्रेरी हमें इंफॉर्मेशन सर्च करिपा हमें वी फॉलो द इंडेक्स प्रोसीजर वेयर द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल वी कैन एक्सेस इमीडिएटली. इट हैज नो टाइम. No, it is not in the first page. It is the book. Okay, then technical inquiry service. What is the technical inquiry services? It is another services technical in the generally specially library. The technical inquiry services are used. It is a single word that is a technical. Okay, what is the meaning of technical? It is affecting something special factor of the act. कौनसी भी गोटे स्पेशल एक्सेट को और स्पेशल कमोड को ये हाईलाइट करे कि टेक्निकल टर्म. इट इज हैव समथिंग टू डू विद द केमिकल मैकेनिकल इंडस्ट्रीज आर्ट और अप्लाइड साइंस. ओके, टेक्निकल इंक्वायरी इज नॉट एनी जेमिति हमें सर्च टेक्निक यूज जानिले सेमति टेक्निकल इंक्वायरीज आर देयर exact formulation are there, exact function are there, but difference is that it is based on only and only in the special libraries like your research organizations like NASA, like your NISERS. Those are based on a particular subject. They are working in particular ascent work.
like your agris is based on the agriculture world, and it will all the research you are doing in the agriculture content, they are developed there. uh, विनोद आग सिलेबस को पढ़ो तापरे आसीबो तापरे मीटिंग लेफ्ट करिवो जॉइन करिवो पिलाटा पूरा बदमाश अछि जॉइन करूची जाउची विनोद वे यू आर जॉइनिंग एंड लेफ्ट विनोदिनी and you first go through the syllabus before attending the class. You go through the syllabus, which paper should be taken in this class. You should all the clear. After that you will join the class. Okay, ma'am. Okay, all the information in the technical inquiry mane kono technical inquiries hela same thing, same content, khali difference kono na it will be defined the special category ro information or special libraries guda kare technical inquiry ro informations guda ka thai. Au gote dinsa technical inquiries are cover technical inquiries cover the industry of the art, industry of the applied science, or any services which is based okay ei sabu dinsa guda ka technical inquiry services should be experienced and experienced by the reference librarian, and it is solving the technical problems, repairing, setting of the machinery of the planning decision, any implicated informations or any decision those are in completing situations, it will be discussed in this section. Okay, in these services, this is known as the technical inquiry services. After that another services is that document delivery services. Okay, what document delivery are समस्त जानी थी पर document delivery services कौन? Document delivery कहले तो इजीली बुझी होची document को deliver करिबा, but actually meaning होची कौन ना it is supply the document to the users on demand. जेतबेले user demand करिबो सेतबेले ताको information or maybe it is the copy or printed or any in other non-printed format. It is the original formulations and it is interpretation in the locality. Suppose gote Assam or semiti amara Kandhamal district hela joti rural ami gote public library kamo karuche. Public library ro kamo hochi kono खाली सर्विस यूजर को दबनी, बुक्स कलेक्ट करी यूजर को दबनी, तार बहुत गुडे रेस्पोंसिबिलिटीज थाए. लाइक से माने कोन करंती ना लोकालिटी रे जो सर्विसेज गुडा को प्रोवाइड होता है ताकू टिके से माने प्रमोटिंग करि थांती. लाइक कंधमाल रे गोटे पब्लिक लाइब्रेरी एस्टैब्लिश हेतिला 2010 अराउंड रे गोटे लाइब्रेरी एस्टैब्लिश हेतिला. सेठी कोन करा जाउतला ना सेठिकार जो आदिवासी संप्रदायर लोक थिले से मानन को डका जाय कि से मानन को सोशल अवेयरनेस करा जाउतला, हाउ दे आर लिव, हाउ दे आर प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द many other affected जेमति कि से माने पढौ नथिले तांको पिला माननकु एजुकेशन दउ नथिले, लाइटिंग व्यवस्था तांकर नथिला, से सब दिनस गुडा को से माने किमति यूटिलाइज करिवे, से माने किमति सोशल एसेट गुडा को इजीली बुझिबे, सेति पई कि पब्लिक लाइब्रेरी मध्ये काम करिथाय. तो सेमिति जगह रे सेति कोन इंट्रोड्यूस हेतिला ना सेठी प्रथमे लोक माननकु एजुकेशन रो कोन बेनिफिट अछि सेटा भी जणेबा दरकार. तो सेति पई कि सिटी गोटे खोला हेतिला एमिति इंस्टीट्यूशन जोटी प्रिंट आउट से समय रे गवर्नमेंट रो जहां रूल्स एंड रेगुलेशन आसुथिला गवर्नमेंट रे कि अप्लाई करबा को चाहुथिले से जो माने अल्प बहुत एजुकेटेड अछंती, सपोज 10 पिलांगर किछि चाकरी बाहरिछि, गोटे पिला केमिति अप्लाई करबो ताको पब्लिक लाइब्रेरी डाकी के आनी कि अप्लाई करबार प्रोसीजर सिखौथिला एंड ताको ता रिलेटेड इंफॉर्मेशंस गुडा को जोगै दोथिला. इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द एक्सटेंशन सर्विसेज एंड आल्सो इट इज एंड द पार्ट ऑफ द containary of the document delivery services. Document delivery services is not that the many special library or any other libraries which are providing their document to their users at the time of the need. Most of the information services such as the current awareness services, followed any indexing abstracting services, any literature search services are aimed to guiding the users to the document where the required information is like to be available. This is the document delivery services and it is effective to determining by the three factors.
document delivery services are affected in the three factor, that is speed, cost, and satisfaction. Speed, if the document delivery services is very slow, if a users come out to the library and access any kind of information, we are not access the information at that time, the users cannot be able to waste their time. तमे भी जेतबेले रिसर्च ପାଇଁ कि कोनोसी जिंस को अपेक्षा करिवो तमे अपेक्षा करिवो तमे नेक्स्ट सोर्स भाबी दबो एक्जेक्टली डीडीएस रो काम होला कोन ना प्रथमे स्पीड अप हबो स्पीड अप मींस जो टाइम रे यूजर रो नीड अछि सेही टाइम रे यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिवो then what is the cost, it will be balance all the cost effect and access all the information without any cost, and users satisfaction is much more important from the DDA services. If the user is not satisfied to getting the information, that the library failure from developing their document delivery services. If the user should be satisfied to access all the information, that means your service pattern or service procedures is good and it will be connected to the users. So it is under a panel to control and to evaluate the document delivery services. One is your speed, one is your cost, and one is your satisfaction. Then next is your translation services. Translation services is an the important services provided by the library or any other organizations to prepare their another section. And your voice is not coming. Achha, may I audible? Now I am audible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now you are audible. Okay. I am audible. May I Yes, audible? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. yes. Okay. Then come to the translation services. Translation services is the process to translating the exact word of any other languages to convert a reasonable language. जो इसको तमे बुझी पारुथबो जानि ओरिजिनल सेंस को टेस्ट करके तो लास्ट तुम ट्रांसलेट के अवेलेबल होगा, that is known as your translation services. The translation according to the literal meaning and it is expression not the consent any other document. The passage of the information is should be followed in a mannerable way, and in this process the original ideas content of a document remain untouchable, unchangeable, and it will express the meaning of the knowledge. Okay. So translation services is a yes, very poor networks today. Evening the class को ले से असुविधा है कि बहुत poor network. That the reasons I am not audible.
Now I am audible, na? Yes, ma'am. Okay. Okay. Then come to the translation Yes, services. Okay. Then come to the translation services. The many organizations are preparing their translation services and provide their translation services to their users for that कि यदि हमें देखिबा in recent years after the Second World War, the translation services are developed, and the services should be promoted by the many organizations, not in the library part. It will be developed many organizations for what? Because many world ro बहुत गुड़े countries are not preparing their documents in the reasonable English languages, like your China, like your South Korea. They are not prepared to analyze the general English languages. They are using their own languages or the French English languages. It is difficult to every users to understanding the constant work. If a scientist is not able to connect it to the English languages, they are developing many research work, and it will be in the original language. It is the original language of the researchers. It is difficult to us to understanding the basic concept of the research. This is the reason every research work to follow a translation services, and every special libraries are prepared to follow the translation services to their users. And the translation services to follow the basic criteria. One is the concept of the original knowledge should not be changed. The feelings of the author that not be changed. The process of original idea should be continue, and the translation at the part of the translation, and it is the express of the information in every asset of the knowledge. से जो इनफॉरमेशन को बेस करे कि सपोज गोटे नोवेल गोटे राइटर लिखिचंदी कर्नाटक लैंग्वेज रे, एंड इट इज द साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाउची, ताहले से नोवेल को आमे पढी परिबा केमिति? हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज़ इट इज इन द कर्नाटक लैंग्वेज एंड वी आर नॉट एबल टू कनेक्टेड टू द कर्नाटक लैंग्वेज, बट इट इज after the available of the information in the part of the English language or our mother tongue Odia language or the Hindi language, we can easily access. Recently ओडिशा इतिहास ऊपर जो बही लिखिथिले कि लिखिथिले एबे नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन कले ना, तर हिंदी वर्जन, एनी आइडिया? नो आइडिया? ओके, Yes, ma'am. तो दिस इज द मतलब लिखिथिले ताको एबे रिसेंटली आउ जने एडिट कले हिंदी रे. इट विल बी पब्लिश्ड बाय द नरेंद्र मोदी. तो जनरल नॉलेज भी टिके टिके रखो, कारण केवी बाहर केमती अप्लाई करिवो. Okay, so this is actually the reason we are preparing for the translation services, because every part of the organization, every part of the research work should be conducted in their original. I mean, if pura research work tak follow kariba, we can access that 50% research work is done by the original language, not in English language. To benefit from the world research को यदि हमें attend करी परिबा, ताले we are follow the translation services to access the different type of the information in our research work. The translation services means the research and represent the word of the one language to the alphabet of the others. Translation माने कहले कोन ना गोटे जिनिसो other language रे represent होबो. Okay. Then what is the translation centers? जो कहली तुमको translation centers कोन translation centers अछि? In many countries have the National Translation Center where set up the monitoring of the translation activities in their countries. Like your China, like your India also, they are preparing the panel or centers. Those are supervising or monitoring the translation activities doing in their countries or in many organizations. Those centers are either carry out the translation work themselves
or they are from permission to other associations, other organization, other database, they are, or other vendors. Those vendors or associations are collecting and processing the translation services to their users. Okay, तो library सहित एटा गोटे copyright issue जेहेतु अछि सेति पय translation centers or translation protocols are followed by the every type of the library or organization. They followed and carry out a translation work with the permission. Okay, okay. Translation centers जदि इंडिया रे तमे देखिबो ट्रांसलेशन सेंटर कोठी अछि योर निस्केयर इज न्यू दिल्ली निस्केयर इज द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसलेशन सेंटर जे इंडिया रे बहुत गुडे ट्रांसलेशन सेंटर करछि ता सहित मेनी ऑर्गेनाइजेशंस मेनी इंस्टीट्यूशंस आर now follow to the variety of translation services like your University of Hyderabad, University of Chennai, University of Delhi, JNU, other organizations or other universities are also now they are providing the translation services to their users. Then application, okay, मु जत्ति की पोर्शन पढ़े सालेनी ता भितर जो माने जहा न बुझी पारुचो प्लीज तमे चैट बॉक्स रे मेंशन करो ताकि मु कोर्स साला बेलकु तुमको से गुडा को एनालाइज करे परिबी. Okay. The application of the content analysis in the information services. Content analysis kono? Content analysis is and the very important activity of every library or information centers. It is an enhance the content analysis using the principle of the clarified the technique use, the general and the quality of the storage and retrieval of the information. Content analysis kono kamo? Content analysis ro na ame library re suppose mo gote school le librarian अछि और गोटे university librarian अछि मो प्रथमे user demand अनुसार बही को access करली come to the housekeeping services in the library सेथिरे हमें कोन देखिली housekeeping services रे मो बही गुडा को केमिति और document गुडा को केमिति access करेबी library मो प्रथमे user demand देखिली user demand हिसाब रे मो पाखरे ए आसी गला ए demand गुडा को users available करिया को चाहउचंती तो सेही available service document भितरु मो देखिली 40% are available in my library. So we are not connected to the, we are not purchasing the 40% of the library. The 40% demand collapse kala. तापर देखिली 20% are available in the low amount. मुझे low amount तक आउट के high को नबा को चाहिए. तापर रोहिला कितने percent? आउ रोहिला 20 to 30%. तो 20 to 30% we can access through the vendors. जितने बड़े vendor को मु कही भी vendor आने की मते दबो मु supplied रखिली information access करली ताको cataloging classification करी भी user पाखरे पहुंची. This is the process of housekeeping. But if it is part of the content analysis, that means what the information we collect in a particular library, it will be benefited from the users and it will be accessed by the all the users those are available in the institutions and it is benefited as part of the users availability. It is accessed by the users and it will be connected to the aspect of the syllabus or the reference pattern. That the reasons content analysis is required from the every library. Content analysis रे हमें आउ कोन देखु ना एबे मु जो मानन को रिसर्च करू छ रिसर्च वर्क करिया को जाउ छ मु कहबी कंटेंट एनालिसिस गोटे बेस्ट पार्ट ततरे कोन करि परिबो सपोज मु गोटे जर्नल रो कंटेंट एनालिसिस करबी मु गोटे जर्नल रो 15 वर्ष रो पब्लिकेशंस कलेक्ट कर 15 वर्ष रो कलेक्शन को नै सला परे मु तार कंटेंट को एनालिसिस करबी तार कंटेंट रे कोन देखिबी ना व्हाट इज द एरिया ऑफ द जर्नल को एरिया को कवर करिछि how it will be benefited from the users ako kete matra re users use karichandi and who are the author of the organization, how many international organization or international professionals are attached in this association, what are the national consent of the informations, what are the area covered by the journals. तो ए गुडा को मु ए जो जर्नल भितर जतेटा आर्टिकल बाहर थिबो से सब तक आर्टिकल को एरिया को कवर करिछि तार थीम कोन ताको किए पब्लिश करिसंती को माने पब्लिश करिसंती को माने अटैच हिचंती को माने यूज करिसंती यूज कला परे तांकर बेनिफिट कोन आछि. दिस इज द कंटेंट एनालिसिस. एबे गोटे टर्म तमे सुनथबो वेब कंटेंट एनालिसिस. वेब कंटेंट एनालिसिस ओके वेब कंटेंट एनालिसिस टर्म ता समय सुनिथिबो तमे जते बेले तमरो थीम गुडा देखिथिबो रिसर्च कला बेलको सेतरे भी गोटे टर्म अछि. दिस इज नोन एज वेब एनालिसिस और वेब कंटेंट वेब मैट्रिक्स और वेब कंटेंट एनालिसिस. सेतरे कोन देखुछो तमे गोटे सिंपली
कोनोसी भी गोटे यूनिवर्सिटी को लॉगिन कर ऊपर कौन देखुच होम पेज अचीवमेंट्स फैकल्टी फैसिलिटीज गैलरी ऑल आर बेसिक जिनस गुड़ाक अच्छी तो से गुड़ाक कौन कौन इनफॉरमेशन अच्छी दोज आर एक्चुअली बेनिफिटेड टू द यूजर्स and those are actually connected to the beneficiary asset of the users and user ताको देखि कि से ऑर्गेनाइजेशन ऊपर कोन पॉइंट ऑफ व्यू करि परिबो को आमे कोन करिबा ना सेटा को एनालाइज करिबा दैट इज वेब कंटेंट एनालिसिस इज द okay content analysis is the platform of that कि कंटेंट एनालिसिस कहले हमें कोनोसी गुटे जिंसर इंफॉर्मेशन स्टोरेज तार कैपेसिटी तार प्रोडक्ट एंड तार मैनेजमेंट को एनालाइज करि परिबा एंड अनदर सर्विसेज इज कस्टमाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस customized organizations means the tolerance of the organization and proceeding process of the organization in the useful manner of the users user of facilities कौन रहुची एरिया कौन रहुची ए सब गुडा को जे हमको एनालाइज करके देई पारुची और it will be given from the part of the accessibility it is known as the customized organization and information services it will be known as that ताको simply हम कहले कौन कहबी it is an a section we will discuss the general information need of the users we can access users Ma'am, your voice is breaking. okay Ma'am, your voice is breaking. okay ओके वेरी मो ग्रुप रे शेयर कर देछि पीपीटी टा यू कैन एक्सेस ओके अच्छा Yes, ma'am. आफ्टर द कंटेंट एनालिसिस एंड citation organizations okay translation services means convert the one original language to okay last theta services uchi I am cover the services after that I will connect it to the questions answer section last services is your ICT used in the library or ICT customized organization or information services. ICT means information communication and technology. Okay, the ICT is implicated in library for the better development of the society, better development of the users part as well as the better accessibility or better workplace from the work platform from the library. We can use ICT from the cataloging. We are using many software or many accessories in our library to access all the information. Now in this pandemic, in the present scenario, we are accessing online sources, online informations to connect to the library. बहुत गुडे लाइब्रेरीज अच्छी जो माने कोन करूचंती ना तांकर ऑनलाइन क्लासेस गुडा को कनेक्ट करै पारुचंती यूजर सपोज ए क्लास टा गोटे पिला अटेंड करिनी तार रिकॉर्डिंग टा को प्रोवाइड करि पारुचंती बहुत गुडे इंस्टीट्यूशंस आर देयर in this COVID situations. So ICT should be customized our organizations to be provide all the informations to our organization and it is given a easy platform
to access all the information in the basically easy way to their users. Okay, then those are the basic services which will be provided in the library or any other information centers. Those are the products and also informations. ବୁଝିପାରିଲ ବ୍ଲକ୍ 3 ଟା କଣ କଣ ଥିଲା? Okay, let's start with the question answer section. Translation services. Okay, translation services is convert to the one original language to the other original languages from the demand of the users. Many libraries are many libraries or organization centers are accessing all the informations. Those are actually demanded thau ki not thau. It is under anticipatory way also. They are providing many informations to their users. Not for that ki users could not connect all the information. As for that ki users can easily access or able to complete their research work. It is the reason many institutions are easily provided all the informations to their users through the translation and document delivery services. ओके अच्छा यूनिट आ परे तमरो गोटे सिंपल चैप्टर्स अछि दैट इज योर इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएटर. ओके इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स और इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएटर जोटा तमरो ब्लॉक 4 रे अछि एंड इट इज तुमको गोटे कथा कहबी तुम माने जेते बेले ई ज्ञानकोशर डॉक्यूमेंट पढुछ तुम पाको तो सब बुक्स अवेलेबल थिबो जेते बेले ई ज्ञानकोशर डॉक्यूमेंट भी पढुछ या फिर अदर इन्फॉर्मेशंस रो तुम कलेक्ट करूछ गोटे को फॉलो करनी मैक्सिमम बुक्स को फॉलो करबा को चेष्टा करो. असाइनमेंट तुम ग्रुप लेख सेतिरे किछि असुविधा नै बट इफ यू आर वांट टू क्लियर ऑल द असेट ऑल द सब्जेक्ट एंड डीपली कंसेंट टू द नॉलेज यू शुड फॉलो मेनी सोर्सेस. If you are not connected to the many sources, you will not access all the information. कारण इग्नो मटेरियल टा ठीक अछि बहुत बढ़िया. Yes, ask the question. Anyone ask the question? Hello, madam. What is the commercial library product? Commercial library products, those are actually okay, commercial library products is that those are actually benefit from the library asset. Like बहुत कुडे जेमिति for examples that is your British National Library. This is your National Library of Kolkata. They are publishing the reference services or known as the INB VNB. It is not in the accessibility of the consent. I mean INB called National Bibliography, National British Bibliography, or NIB. This is the Indian National Bibliography. It will be published all the information. Those are all the books. Those are published in our country. It will be systematically arranged alphabetically in the INB. इंडिया रो कोनोसी भी जगह रे बही पब्लिश हो तार सिस्टमैटिक अरेंज हे कि लेखा हेता है आईएनबी रे जोटा हम लाइब्रेरीज गुडा को गोटे बेनिफिशियल कंसेंट जे हमें जो बुक्स किनिया को चाहेबो सेही थ्रू रे किनि पारू. बट इफ इट इज नॉट इन द कमर्शियल प्रपोजल बट many organizations, many institutions are providing their notes, their consent journals, their home in their libraries. They are publishing all the accessible information, accessible very cost for the benefit of the library. This is the commercial library product. But in India, many very rare institutions are there follow the commercial library products. They are all are provide their products from the service of benefit of the users, not for the commercial asset. Okay, ISBN number. ISBN number is a number of international standard book number which is provided by the RRLF, Raja Rammohn Rai Life Federation in India. If you are published a book in the platform of the any subject, कोनोसी भी सब्जेक्ट रो गोटे बही तमे पब्लिश करबा को चाहिबो से बहीटा को प्रथमे तमे लेखि सरला परे ताको publishers should be followed a one book to the RRLF to access the ISBN number. RRLF to access all the information, analyze your books. After that, it will be not in copyright content.
then RRLF given a number that is known as your ISBN number. After the ISBN number, you can publish your book, and after the publication of the book, you should follow the Copyright Act 1954. You minimum 4 copies should send the Kolkata National Library reference library. So the reference library can publish the INB in Indian National Bibliography. Yes, it is a globally. Examples of newsletter. NICER is published a newsletter in their organizations. So that I can share a image of newsletter or LIC new anyone interested to read the newsletter? Anyone interested? So I can share a newsletter of okay. Then I can share a newsletter of LIC. LIC रो कोटे newsletter को share करते हैं. You can access and you know that what is the newsletter. Okay, ma'am. Okay. Hope you all are enjoy my class. Besides the Yes, network ma'am. problem. Yes, ma'am. Your class is so awesome, ma'am. Yes, ma'am. I am trying to clear all the information. Those are actually this paper is very tough actually. This is not a simple paper. It is an based on many concepts like information product, information organization, information services, and information services. Those are not easy services. It is and the basically services. It is very heavy to contain and heavy to manage. And I am trying to access all the information to you. Hope you all are enjoy my class. Ma'am, can I got your number? I have a suggestion. If anyone cannot understand the basic element of any question, you can after the read my PPT or you after the accessing those information based on your book, you can question me in my personal WhatsApp number. I can try to convey my knowledge to you. Okay. Ma'am, Any please give your questions? WhatsApp number, ma'am. Any questions? Ma'am, please give WhatsApp number, ma'am. Please. Ma'am, already in our group. ग्रुप रे अछि. Okay. Thank you. Yes, I am share my Madam, PPT is very I am informative. share PPT in group. Statistical review. Okay. What is the meaning of statistical review? Okay. Okay, statistical review is a trade report which is very much which is in the statistical review all the information are analyzed, consulted and repackaged in the specifically way by the subject specialist to the chief objective of that the information is delivered to the users as the part from their understanding level. Okay, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ organizations informations को no review not review for all data no review for the whole data is not suppose ତମେ ଗୋଟେ research କରୁଛ ତମେ ଶୋଧଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଟେ ଏକା ପ୍ରକାର ୟୁଜ suppose ମୁଁ ଗୋଟେ web analysis ଉପରେ research କରୁଛି ମୁଁ ଏକାଥରେ 30-40 ଟା document ପାଇଲି 40 ଟା document ରେ 1000 papers are there. And jodi eta gote theoretical concept achi it will be understanding. If it is a technical content, if it is the statistical content, if it is at the economical content, suppose we can access, we can analyze the information about the human growth of the world.
or you can access where the suppose you are accessing or you are continue your project known as the coronavirus. तमे coronavirus ऊपर research करूचो या फिर सेमिति किछि virus those are affecting to our society. तो तमे केतेटा journals पाइबो ता ऊपर 1000 journals are there. तो 1000 journals को तमे ताको पढी कि तात्रो review किछि बाहर करि परिबोनी. But if you are accessing a one type of the review journals or review statistical report where all the information are reviewed by a special persons, it will be accessed, repackaged and consulted and analyzed by the subject specialist. कोनोसी भी गोटे लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जेतेबेले सेही सब्जेक्ट रो कोनोसी स्पेशलाइज सब्जेक्ट पर्सन्स को द्वारा और रिसर्चर्स को द्वारा एनालाइज्ड हेची कंसल्टेंट हेची एंड इट विल बी रीपैकेज हेकी आसीची ताले यू कैन एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशंस. Okay, this is the criteria ki review of statistical review or review of statistics to be yes summarized. Yes ma'am, review yes summarized of the data in the by the specialized persons, by the subject specialized. Okay, it is summarized of the data, review of summarize of the data, yes, but it is by the some special persons, some specialized of the subject persons, not by anyone. But your review, public's review or any statistical review which is by the any persons. But in the statistical review, no, it is only for the special library, not in the academic libraries. It is and only for the special libraries. Basically, reference services are followed by the special library or university libraries. It is not applicable in any school or college library. Many academic libraries like your IIT libraries or any big institutions like University of Hyderabad, University of Chennai, University of Lucknow, those are actually conducting variety of research works. They are followed those services like statistical review, document delivery services. No, it is not in public library. Public library are not followed the statistical review concept, but they are followed the translation services, document delivery services, CA services, SDA services, many other services, not from the statistical review services. They are not followed. It is will be applicable for the special and some academic libraries like IIT or the basic institution. Okay, any other question? Okay, then left all. Thank you very much. Thank you very much. You have very patiently listened my class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you, madam. Thank you, madam.